Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. So yesterday we talked about chapter 2 of Election Act 2017. उसमें हमने chapter 2 के 11 to 16 sections complete कर लिए थे और where we have completed chapter 2. Today we are going to start chapter 3 और chapter 3 जो है वो basically about delimitation of constituencies के बारे में है. So basically जो हल्के बनाए जाते हैं at the time of इलेक्शंस उनके बारे में डिस्कशन की जा रही है इस चैप्टर में. तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर. Commission to delimit constituencies. The commission shall delimit territorial constituencies for elections to the National Assembly, Provincial Assembly, and to the local government in accordance with the provisions of the Constitution. This Act, the rules, and the applicable government law. The Commission shall delimit constituencies after every census officially published. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिंपल वर्ड्स में. तो सेक्शन 17 deals with the responsibility of Election Commission of Pakistan in delimiting drawing boundaries. Delimiting means के boundaries को draw करना of the electoral constituencies for different levels of elections. सबसे पहले सब सेक्शन में बात की गई है स्कोप ऑफ डिलिमिटेशन. ECP is responsibility to delimit territorial constituencies for किसके लिए? नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड लोकल गवर्नमेंट तीनों के लिए. ECP जो है वो किसको फॉलो करते हुए डिलिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करेगा, इलेक्शंस एक्ट 2017 को फॉलो करेगा, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट जो कि इस एक्ट के थ्रू रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करेगा, और एप्लीकेबल गवर्नमेंट लॉज को जिसके अंदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉज जो है और लोकल गवर्नमेंट उनको फॉलो करेगा. टाइमिंग ऑफ डिलिमिटेशन की कब जो है वो बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाएगा फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो जब भी एक मर्दमशुमारी होगी किसी भी एरिया की तो उसके बाद जो है बाउंड्रीज को डिलिमिट किया जाएगा दोबारा से. Trigger events: every census officially published. After publication of new census result, ECB must redraw constituency boundaries accordingly. Let's see the MCQs that are important from section 17. Which body is responsible for delimiting constituencies in Pakistan? So the answer is Election Commission of Pakistan. Question number 2. The ECB must delimit constituencies for which bodies? नेशनल असेंबली के लिए, प्रोविंशियल असेंबली के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए. द डिलिमिटेशन प्रोसेस मस्ट फॉलो. ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एक्ट, रूल्स एंड एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज. When must the ECB delimit constituencies? After every census officially published. Delimitation refers to option B, drawing boundaries for constituencies. The term applicable local government law refers to option B, federal and provincial laws for establishment of local government. Which census data is used for delimitation? तो जो recently published होता है officially published census उसका data use किया जाता है. Delimitation must be in accordance with option B, Constitution, Election Act, rules and local government law. The purpose of delimitation constituencies is to option A, ensure equal population representation. Which of the following is not mentioned in section 17? Option A क्या है? ECB shall delimit constituencies after every census, ये mention किया गया. Option C देखते हैं. Delimitation is to be done according to the law and constitution. ये भी ठीक है. Delimitation applies to
नेशनल, प्रोविंशियल एंड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो ये भी ठीक है, ये भी कहा गया। तो कौन सा नहीं कहा गया? ऑप्शन बी, पीसीबी शैल डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सेनेट। सेनेट के लिए नहीं करेगा, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए करेंगे। Next we have section 18, seats in national assembly and provincial assembly. There shall be seats in the national assembly allocated to each province, Islamabad Capital Territory (ICT), and seats reserved for women and non-Muslims as specified in Article 51. ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली की जो रिजर्व सीट्स हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में। अगर प्रोविंशियल असेंबली की बात करें, देयर शैल बी सीट्स इन ईच प्रोविंशियल असेंबलीज consisting of general seats and seats reserved for women, non-Muslims as specified in Article 106. तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज की रिजर्व सीट्स हैं फॉर वुमेन एंड नॉन-मुस्लिम, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 106 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। Section 18 explains the composition of seats in Pakistan's National Assembly and provincial assemblies. National Assembly seats, subsection 1. Seats in the National Assembly are allocated to each province and Islamabad Capital Territory and include general seats, reserved seats for women, and reserved seats for non-Muslims. Details of allocation provided in Article 51 of the Constitution. Provincial Assembly. Each provincial assembly consists of general seats, reserved seats for women, reserved seats for non-Muslims. Details of allocation provided in Article 106 of the Constitution. Key point इसमें क्या डिस्कस किया गया? Section 18 itself does not give the number of seats. It refers to the Constitution for exact figures. MCQs which are important from this section. The allocation of seats in National Assembly is specified through National Assembly में Article 51. Which seats are included in National Assembly according to Section 18? General seats, reserved seats for women, and reserved seats for non-Muslims. Seats in provincial assemblies are specified in Article 106. Reserved seats for women, non-Muslims in the National Assembly are provided in which constitutional provision? So same Article 51. So questions की जो statement है वो भी change है यहाँ पर. Reserved seats for women and non-Muslims in provincial assemblies are provided under Article 106. Section 18 mentions allocation of National Assembly seats too. तो कहाँ जो है allocate की गई है? प्रोविंसेस में, इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और रिजर्व्ड कैटेगरीज. The total number of seats for National Assembly is determined by option C. नेशनल असेंबली में आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया जाता है. Which one is not mentioned in section 18 as a category of seats? General seats, reserved seats for women, reserved seats for non-Muslims, reserved seats for overseas Pakistan. So the D option is not mentioned in section 18. The allocation of seats in provincial assemblies include provincial assemblies में जो allocation है seats की, उसके अंदर क्या क्या शामिल है? जनरल seats reserved for women and reserved for non-Muslims. Section 18 links to the Constitution for seat allocation, which is correct. National Assembly seats तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आर्टिकल 51 और प्रोविंशियल असेंबली सीट्स आर्टिकल 106, ऑप्शन ए. तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए याद करने वाली चीज वो यही है कि किस आर्टिकल में नेशनल असेंबली सीट्स के बारे में बात की गई है और किस आर्टिकल में प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के बारे में बात की गई है. Next we have section 19, which is about delimitation of constituencies.
For the purpose of delimitation to the National Assembly, the Commission shall divide each province into as many separate territorial constituencies as the number of general seats allocated to that province in Article 51. Islamabad Capital Territory into as many separate territorial constituencies as the number of general seats allocated thereto in Article 51. A province shall be single constituency for all seats reserved for women, which are allocated to each province in Article 51. The constituency of all seats reserved for non-Muslims in National Assembly shall be the whole country. For the purpose of elections to provincial assemblies, the Commission shall divide each province into as many separate territorial constituencies as the number of general seats specified in Article 106. The constituency for seats reserved for non-Muslims and women in the provincial assemblies shall be such that the province forms one constituency with as many such seats as are allocated to that province in Article 106. For the purpose of election to the local government, the Commission shall carry out delimitation with due regard to applicable local government law. Explanation देखते हैं सेक्शन 19 की. Section 19 lays down how the Election Commission of Pakistan divides constituencies. तो इसमें बताया गया कि किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फॉर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए. नेशनल असेंबली में किस तरह से की जाएगी, सबसे पहले वो देखते हैं. प्रोविंसेस. अब नेशनल असेंबली में जो सीट्स होती हैं वो हर एक प्रोविंस में डिवाइड की जाती हैं कि इस प्रोविंस की इतनी सीट्स होंगी, नेशनल असेंबली में इसकी इतनी होंगी. ठीक है. Each province is divided into as many territorial constituencies. तो जितना जो है एक प्रोविंस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बनाई जाएंगी. एक मतलब कि फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं. जस्ट सपोज, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट फिगर. ठीक है. तो उसको 100 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाएगा, मतलब उसके अंदर 100 हल्के ही बनाए जाएंगे. As the number of seats allocated to that province in Article 51. जब हम Article 51 डिटेल में पढ़ेंगे तो we will get to know कि जो प्रोविंशियल डिवीजन है नंबर ऑफ सीट्स की इन नेशनल असेंबली वो क्या है. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा जितनी की जो जनरल सीट्स हैं वो अलॉट की गई हैं इन Article 51 फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी. रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन की बात करें तो उनके लिए जो यहाँ पर सेक्शन में बात की गई है कि हर जो एक प्रोविंस है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा फॉर इट्स रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन. ठीक है. नेशनल असेंबली के केस में एक प्रोविंस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक हल्का ही कंसिडर किया जाएगा अगर रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन की बात की जाती है. नेक्स्ट वी हैव रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम. इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम्स और नेशनल असेंबली की बात की जा रही है तो वहां पर पूरी कंट्री ही एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको ट्रीट किया जाता है फॉर रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. नेक्स्ट वी हैव प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ईच प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इक्वल टू द जनरल सीट्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 106. ठीक है. अब प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है तो जितनी प्रोविंशियल असेंबली में सीट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही एक प्रोविंस को डिवाइड किया जाएगा जैसा कि आर्टिकल 106 में बताया गया. रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स. अब इस केस में जो है ईच प्रोविंस जो हर एक प्रोविंस है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है वुमेन के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी फॉर इट्स रिजर्व सीट्स. लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की गई तो जो भी लोकल गवर्नमेंट लॉज होंगे उनके अकॉर्डिंगली ही जो ईसीपी है वो डिवाइड करेगा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट बाय द ईसीपी इन लाइन विद द रेलेवेंट लोकल गवर्नमेंट लॉज. की पॉइंट इसमें क्या डिस्कस किया गया है. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ओनली फॉर जनरल सीट्स
Reserved seats have larger single constituency setup. तो जो reserved seats होती हैं उनका larger और single constituency setup होता है. Section 19 से important MCQs क्या हो सकते हैं? Question number 1. Delimitation of constituencies for National Assembly is done according to. National Assembly की बात हो रही है. Again, Article 51. In the National Assembly, each province is divided into territorial constituencies equal to the general seats allocated in Article 51. Option B. How many constituencies does ICT, Islamabad Capital Territory, have for National Assembly general seats? तो कितनी constituencies हैं ये भी डिपेंड करता है on allocation in Article 51. For reserved seats for women in National Assembly, each province is one constituency for all such seats. हर प्रोविंस को एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाएगा रिजर्व सीट्स फॉर नेशनल असेंबली के लिए जो कि वुमेन के लिए है. फॉर रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज. अब इस केस में नॉन मुस्लिम के केस में द होल कंट्री इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केस ऑफ नेशनल असेंबली. Delimitation of constituencies for provincial assembly is done according to. तो delimitation जो की जा रही है प्रोविंशियल असेंबली में वो आर्टिकल 106 के अकॉर्डिंग की जा रही है. रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन प्रोविंशियल असेंबलीज आर फिल्ड फ्रॉम ईच प्रोविंस एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब एक जो है वुमेन के केस में प्रोविंशियल असेंबली में जो है एक प्रोविंस को एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाता है. रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इन प्रोविंशियल असेंबली आर. तो इस केस में भी जो है एक पूरे क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है प्रोविंस वाइज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी पर प्रोविंस. ठीक है, तो एक प्रोविंस में एक ही जो है उसको हल्का कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम. फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट. तो कैसे जो है वो डिलिमिटेशन की जाती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में? बाय ईसीपी. ईसीपी करता है अंडर एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ. ऑप्शन बी. Which of the following is true under section 19? तो कौन सा इसमें ट्रू है? ऑप्शन ए देखते हैं. रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली आर कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड. नेशनल असेंबली में जो है वो ऐसा नहीं होता, वो पूरे प्रोविंस को ही एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाता है. रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असेंबली आर प्रोविंस बेस्ड. ये भी गलत है. इसमें जो है वो पूरी होल कंट्री को एज अ प्रोविंस एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाता है. ऑप्शन बी देखते हैं. डिलिमिटेशन फॉर लोकल गवर्नमेंट इज डन अंडर नेशनल असेंबली रूल्स. ये गलत है. जो लोकल गवर्नमेंट लॉज हैं उनके अंडर जो है डिलिमिटेशन की जाएगी लोकल गवर्नमेंट्स की. और ऑप्शन सी देखते हैं. आईसीटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिटरमिन्ड बाय आर्टिकल 51 व्हिच इज ट्रू. तो जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय आर्टिकल 51. The next we have section 20 that is about principles of delimitation. पहले हमने देखा कि how delimitation is done. ठीक है, उसके कुछ रूल्स देखे हमने. अब आगे आ रहे हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किन प्रिंसिपल्स को हम ईसीपी जो है वो माइंड में रखते हुए या उनके ऊपर काम करते हुए डिलिमिटेशन करेगी. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा वो पॉपुलेशन होगी. देखते हैं इसको डिटेल में. All constituencies for general seats shall, as far as practicable, be delimit having regard to the distribution of population in geographically compact areas, physical features, existing boundaries of the administrative units, facilities of communication and public convenience, and other cognate factors to ensure homogeneity in the creation of constituencies. ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं ये नीचे हम एक्सप्लेनेशन में डिटेल में भी देखेंगे. Subsection 2 was removed or eliminated. So the subsection 2A is for the purpose of delimiting constituencies for general seats of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa for tribal areas, two or more separate areas may be grouped into one constituency.
for their elections to be held in 2019 and by elections related thereto, and thereafter this subsection shall stand omitted. तो बेसिकली 2019 में एक कह सकते हैं कि ऑप्शन बनाई गई थी केपीके के लिए, जो कि उनको दी गई थी कि वो किस तरह से अपने जो है इलेक्शंस करवाए जाएंगे, मतलब कि दो ग्रुप्स को आपस में, दो ट्राइबल एरियाज को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया गया था, बट इसको जो है वो ओमिट कर दिया गया। उसके बाद से ये ओमिटेड है, मतलब निकाल दिया गया, नॉट एक्टिव। Third subsection is asked, as far as possible, variation in population of constituencies of any assembly or local government shall not ordinarily exceed 10%. So this is very important. यहाँ पर आपने 10% की जो फिगर है वो याद रखनी है कि जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनके अंदर जो पॉपुलेशन की वेरिएशन है वो 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, provided that for this purpose it shall not be necessary to strictly adhere to existing district boundaries in exceptional cases। मतलब कि इस पर्पज में अगर किसी जगह की जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो ये जरूरी नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं उस जगह की उनको माइंड में रखा जाए, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि देखा जाता है वाइल डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इन केस जो वेरिएशन है वो ज्यादा हो रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो 10% वेरिएशन की लिमिट रख दी है उससे कम ही हो, उससे ज्यादा ना हो। If the limit of 10% under subsection 3 is exceeded in exceptional case, अगर exceptional case में जो है वो increase हो भी जाती है, the commission shall record reasons thereof in the delimitation order। तो उसमें जो है कमीशन रिकॉर्ड करेगा रीजंस जो भी इसमें आई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Section 20 outlines the guidelines the Election Commission of Pakistan must follow when drawing constituencies boundaries for general seats। तो क्या गाइडलाइंस बताई गई हैं? Basis for delimitation, subsection 1, constituencies for general seats should be delimited keeping in mind इस चीज को सबसे important population distribution in geographically compact areas। Secondly, physical features, mountains, rivers, etc. आ जाएंगे इसमें। Existing administrative boundaries जो कि बनाई गई हैं, districts बनाए गए हैं, तहसील बनाई गई हैं, उनको भी माइंड में रखा जाएगा। Facilities of communication, roads, accessibility इसको भी देखा जाएगा। Public convenience को भी देखा जाएगा and other related factors to ensure homogeneity means similar characteristics in a constituency। Special provisions for KP tribal areas, subsection 2A, for Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa in 2019 general elections and any related by-elections, two or more separate areas could be grouped into one constituency for tribal areas। This provision was temporary and stands omitted। तो ये जो थी provision ये temporary थी और उसके बाद ये खत्म हो गई। Population variation rule, population variation between constituency of same assembly or local government should not ordinarily exceed 10%। ये 10% से exceed नहीं करनी चाहिए। Exception allowed, strict adherence to delimit boundaries is not required in exceptional cases। If the variation exceeds 10%, reasons must be recorded in delimitation order। इसी भी की पॉइंट इसमें क्या है, इसी भी मस्ट बैलेंस पॉपुलेशन इक्वालिटी विद जियोग्राफिकली एक्सेसिबिलिटी, geography, accessibility, and administrative boundaries, but can deviate in special case if justified। So, which MCQs could be of importance from section 20? The primary factor in delimiting constituencies for general seats is, primary factor मैंने आपको बताया population distribution in geographically compact areas। Which one of the following is not mentioned as a factor for delimiting constituencies? वोटिंग पैटर्न्स इन लास्ट इलेक्शन, इसको जो है वो नहीं कहा गया कि इट इज अ फैक्टर फॉर डिलिमिटिंग कॉन्सिक्वेंसीज। तो कौन कौन से फैक्टर्स बताए गए हैं?
Physical features, yes. Community facilities, yes. और homogeneity ये भी कहा गया है, it should be there. So जो D option है, that is not mentioned in section 20. Under section 20, existing boundaries of administrative units should be considered but not strictly followed in exceptional cases. Option C. The maximum variation in population between constituencies is ordinarily 10%. If the population variation exceeds the allowed limit, ECB must record reasons in delimitation order. In 2019, KP Provincial Assembly constituencies for tribal areas could group two or more separate areas into one constituency. The special provision for grouping separate areas in KP was option C, applicable only for 2019 elections and related by-elections. Question number 8. The special KP tribal areas delimitation clause is now omitted after 2019 elections and related by-elections. Homogeneity in delimiting constituencies means keeping areas with similar characteristics together. Communication facilities are considered in delimiting constituencies because क्यों किया जाता है? Option B, they ensure voters can easily access polling stations. The next we have section 21, which is about reports of commission and list of constituencies. क्या पीछे हमने देखा कि प्रिंसिपल्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के? अब हम देख रहे हैं कि जब एक दफा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं तो उनकी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी और सबमिट करवाई जाएगी बाय द कमीशन. फॉर द पर्पस ऑफ delimiting constituencies, the commission may receive and consider representation, hold inquiries, summon witness and record evidence, and shall prepare and publish in official gazette a preliminary report and list of constituencies, especially the areas proposed to be included in each constituency. The commission shall invite representation in respect of the preliminary report within a period of 30 days from the date of publication. A vote in a constituency may, within a period specified in subsection 2, make representation to the commission in respect of the delimitation of that constituency proposed in the preliminary report. The commission shall, after hearing and considering the representation, if any, received by it, make such amendments, alterations, or modifications in the preliminary list of constituencies published under subsection 1 as it thinks fit and necessary, and shall within a period of 30 days from the last date fixed for making representation under subsection 2 publish in the official gazette and on its website the final report and the list of constituencies showing the areas included in each constituency. ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है, नीचे हम एक्सप्लेनेशन में बल्कि देख लेते हैं और क्या बात की. Section 21 deals the process the Election Commission of Pakistan must follow for delimiting constituencies and publishing their details. तो सबसे पहले सेक्शन 1 में बात की गई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की. फॉर delimiting constituencies, the commission may receive and consider representations, feedback, suggestions, objections, hold inquiries, summon witness, and record evidence. Must prepare and publish in official gazette. Preliminary report means not final report. List of constituencies specifying areas proposed for each. Invitation for representation, subsection 2. The commission will invite representations on preliminary report. और क्या उसकी लिमिट रखी गई है कि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसकी कंप्लेंट के लिए या ऑब्जेक्शंस देने के लिए वो विद इन 30 डेज रखी गई है ऑफ पब्लिकेशन.
Who can make representation? A voter of the constituency can make a representation on delimitation of that constituency. Must be submitted within 30 days from publication of the preliminary report. And the subsection 4 is about final report and list. अब उसमें जो commission है, it will hear and consider the representations, make amendments or alterations or modifications if necessary. Publish the final report and list of constituencies. कहाँ कहाँ पब्लिश करेगा? इन ऑफिशियल गजेट ऑन ईसीपी's वेबसाइट. और इसको भी एक डेडलाइन दी गई है विदिन 30 डेज, जो कि 30 डेज रखे गए थे सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए ऑब्जेक्शंस और फीडबैक्स. जो जब वो वाले 30 डेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद और 30 डेज दिए जाएंगे कमीशन को कि वो डिसीजन ले. और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग रिप्रेजेंटेशंस, और जो फाइनल लिस्ट है उसको विदिन 30 डेज में वो पब्लिश करें. तो सेक्शन 221 में की पॉइंट क्या था? इंश्योर्स ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विद पब्लिक पार्टिसिपेशन बिफोर फाइनलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज. Let's see the important MCQs from section 21. The commission may summon witness and record evidence for option B, delimiting constituencies. The commission publishes the preliminary report and list of constituencies in. कहाँ पर करेगा पब्लिश? ऑफिशियल गजेट में करेगा, अपनी वेबसाइट पर नहीं करेगा. The preliminary report must specify क्या होना चाहिए? areas proposed for each constituency. The representation of preliminary report must be invited within 30 days. Who can submit a representation regarding the preliminary delimitation? कौन submit करवा सकता है? Any voter of the concerned constituency. The representation period is counted from the date of publication of the preliminary report. After hearing the representation, the commission may amend, alter, or modify the preliminary list. The final report must be published within 30 days from the last date of receiving representations. The final report is published in Official Gazette and ECP website, दोनों पर, which document allows the areas included in each constituency. Shows the area included in each constituency. कौन सा document होगा? Final report and list of constituencies. And the last section we have in chapter 3 is section 22, power of commission to make amendment, alteration or modification in final list of constituencies. Notwithstanding anything contained in this act, the commission may anytime but at least 4 months before the notification of election program of its own motion and for the reason to be recorded, make such amendments, alterations, or modifications in a final list of constituencies published under subsection 4 of section 21 or in the areas included in a constituency as it deemed necessary. The commission shall publish in the official gazette and on its website the proposed amendments, alterations, or modification with their justification and invite and hear representations in respect thereof before final decision thereon. Explanation. Section 22 gives the Election Commission of Pakistan authority to make changes to the final list of constituencies under certain conditions. Subsection 1. ECB को authority दी गई है, notwithstanding anything in this act means that this power overrides over other sections. The commission may at any time but at least 4 months before the notification of election program make amendments, alterations, or modifications in final list of constituencies published under section 21, subsection 4, or areas included in a constituency. Must have reasons recorded in writing.
प्रोसीजर फॉर चेंज क्या होगा, सब सेक्शन 2 में बताया गया। द कमीशन मस्ट पब्लिश द प्रपोज चेंज इन ऑफिशियल गजट एंड ECP वेबसाइट, include justification for changes, and invite and hear from stakeholders before making a final decision. So the key point discussed in section 22 is this section ensures that the constituency changes are transparent, justified, and open to public input, but cannot be made within 4 months of the election program. So 4 months वाली जो बात है ये आपने याद रखी है, this is very important. The ECB can amend final list of constituencies. Option B, at any time but at least 4 months before election program notification. The power under section 22 applies to option C, both national and provincial constituencies. Amendments to constituency boundaries required. Option B, reasons recorded in writing. Before making final changes, ECB must invite and hear representations. Option C. Proposed amendments must be published in option C, official gazette and ECB website. The justification for amendments must be option C, published along with the proposals. The ECB can make changes to option C, final list of constituencies or areas included in them. Question number 8. Changes under section 22 can be made. Option C, only before 4 months of the election program. तो सिर्फ 4 महीने पहले जो है वो किया जाएगा, उससे बाद नहीं किया जाएगा। जब 4 महीने रह देंगे या 3 महीने रह देंगे तो तब जो है वो चेंजिंग नहीं किए जाएंगे। The final decision on proposed amendments is made. Option A, after hearing representations. Section 2 overrides. ठीक है, ये जो ओवरराइड कर रहा है एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो है ये हर प्रोविजन से ओवरराइड करता है, इसकी पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। So this was about chapter 3 of election act, और इसमें हमने 6 sections पढ़े हैं from section 17 to section 22. Tomorrow we will start chapter 4, जिसके अंदर 27 sections हैं हमारे पास from section 23 to section 49. So inshallah we will start that tomorrow. This is all for today. If you guys have any questions, feel free to ask.